Hello, I am Ramesh from SGETS। आज हम हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट स्टार्ट करने का, तो चलो स्टार्ट करें। लेसन 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। What is a computer? Computer is an electronic machine which is made up of devices used for input, processing, storage, and output. The computer processes the input data with the help of a program to generate information and bracket output. Now we go features of a computer. The word computer is derived from the word to compute, which means to calculate initially. Computers were used only to perform big and complex calculations. But today, a computer is used to read, write, draw, and perform many other functions. With the help of a computer, we can perform complex calculations very quickly and accurately. A computer can store and record a large amount of data. Number 1. Speed. This computer has this fantastic speed of performing and by any time. It can perform even the most complex calculations very quickly and accurately. For example, if you are asked to multiply 125 by Ch.1, you will need a few minutes to give the answer, and that answer could even be wrong. But a computer will give you the correct answer in a few seconds. अगर आपको कहा जाए कि 125 को 7 से डिवाइड करना है, तो आपको मिनट्स लगेंगे और आंसर शायद रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर का आंसर सही ही होगा और वो भी चंद सेकंडों में। नंबर 2, tirelessness. Computer never gets tired or bored. It can do the same work repeatedly for a very long time. It can work continuously without getting tired. Number 3, accuracy. Computer can work continuously without making any mistakes, and the computer makes mistakes only when wrong data or instructions are entered into it. So we can say that accuracy and reliability are the most important features of a computer. Number 4, repetitiveness. When you do the same work repeatedly for a long time, you do not only get bored or tired, but also your speed of doing the work reduces gradually. But the computer can continuously do the repetitive work with the same speed and accuracy. Number 5, storage. The computer can store a large amount of information. This information could be text or even pictures. It can store thousands of pages of data. You can retrieve this data whenever you need it. Number 6, versatility. As you already know, a computer is used in schools, offices, banks, airports, universities, hospitals, and in many other fields. Okay. In this age of electronic communication, computers are used to share or exchange information. Computers trade curiosity. The countries are connected with one another to form a network. This worldwide computer network is known as the Internet. Email is one of the biggest advantages of the Internet. It is used to send messages or information to computer users across cities or countries in a few seconds. अब यही सारा हम हिंदी में समझ लेते हैं कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर है एक मशीन जो हम इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में जानकारी दी गई। बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में भी हम थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। The word computer is derived from the word
टू कंप्यूट। आज का जो विषय है इसके बारे में हर किसी को थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। इसको आप हर रोज इस्तेमाल करते होंगे या फिर कहीं ना कहीं आपको देखते भी होंगे। इसका इस्तेमाल हर जगह है, जिसने इंसान को जिंदगी आसान से आसान बना दी। इसके बिना ये दुनिया अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। घर में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, दुकान में, मेडिकल स्टोर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, रिसर्च और टिकट काउंटर, एटीएम, बैंकिंग, इन सभी क्षेत्रों में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। एक सेकंड में करोड़ों का हिसाब करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका नाम है कंप्यूटर। आज हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर क्या है और इसके फीचर्स। कहने में तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या प्रोग्रामेबल डिवाइस है, या वो डिवाइस है जो इंसानों की तुलना में बहुत तेज है। तो उसकी डेफिनेशन हम जान लेते हैं। कंप्यूटर बहुत कम समय में टास्क को एग्जीक्यूट करता है। टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर में कई इंस्ट्रक्शन रहते हैं जो इंसानों से काफी तेज है। अब हम कंप्यूटर की विशेषताएं देखेंगे। आजकल का जमाना मशीन का है, जिसे हम लैपटॉप और डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। इन कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में अपने पूरे विस्तार से जानते हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक के विशिष्ट गुण होते हैं, जिनमें से कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ खराब। यहाँ दोनों के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड। कंप्यूटर सारे काम को बड़ी तेजी से करता है। बहुत बड़े काम को पलक झपकते करता है, जबकि उसी काम को करने के लिए इंसानों को कई घंटे, कई दिन या कई महीने लगते हैं। कुछ ही सेकंड लगते हैं कंप्यूटर। नंबर 2, टायरलेसनेस। कंप्यूटर की विशेषता जिसे एजिलिटी भी कहते हैं। कंप्यूटर को एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है। इसे थकान या बोरियत महसूस नहीं होती है। हर बार समान क्षमता से काम करता है। एक्यूरेसी। कंप्यूटर अपने सारे काम बड़ी तेजी से करता है। इसके साथ साथ पूरा सही से भी करता है। उसका सारा काम वह पूरा सटीक तरीके से करता है। उसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर कंप्यूटर को दिया गया इंस्ट्रक्शन या कुछ भी आदेश सही हो तो उसका आउटपुट भी सही ही होगा। पुनरावृत्ति। कंप्यूटर आदेश लेकर एक ही तरह के कार्य बार बार विश्वसनीयता और तीव्रता से कराए जा सकते हैं। स्टोरेज कैपेबिलिटी और लार्ज मेमोरी। कंप्यूटर में डाटा रखने की क्षमता बहुत अधिक है। जब किसी भी प्रकार के डाटा को रख सकता है, वह डाटा चाहे कुछ भी हो, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट ही क्यों ना हो, हम उसमें कोई भी डेटा डाल सकते हैं। वर्सेटाइलिटी। कंप्यूटर सभी प्रकार के काम करता है। कंप्यूटर साइंटिफिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ साथ व्यवसाय के संबंधित सारे काम भी बड़ी आसानी से करता है। तो कंप्यूटर मनोरंजन के लिए भी हमारे साथ खेलता है। अब हम नेक्स्ट पेज रीडिंग करेंगे इंग्लिश में, जिसका पहला पैराग्राफ हमने पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ ए कंप्यूटर। नंबर 1, ग्रेटर एक्यूरेसी। Computers help people to do their work more efficiently. For example, in offices, computers are used to maintain accounts, keep records, etc. All the work is done accurately in a short time. Better services. With the use of computer calculations and airports, resolution of tickets has become easier. In banks, computers are used to keep accounts of depositors and providing them quick service. Use of computers in offices, hotels, hospitals, and other places has reduced the workload and also given better services to the people. Number 3, education. Computers are used in schools, colleges, and educational institutions to teach all subjects. Learning with the help of computers is not only easy and quick, but greater fun too. Number 4, entertainment. Computers are used to listen to music, watch movies, watch cartoons, and even play games. Computers are also used to compose music. अब हम देखेंगे history of computers. Based on technology used
In building a computer, computers are divided into several generations. Let us briefly learn about different computer generations. ABACS. Thousands of years ago, man didn't have to do many complex calculations. Primitive man used two fingers and toes doing odd numbers for counting. But when man started studying, he felt the need to use various mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, and division to do such calculations with the speed and accuracy. About 5,000 years ago, the first calculation device known as ABACS was invented in China. An ABACS consists of a row of wires fixed on a wooden frame. The wires have multi-colored beads strung on them. Simple calculations were done very quickly by sliding the beads up and down on the wires. Soon, the ABACS began to be used in many countries all over the world. अब हम एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में हिंदी में समझ लेंगे। संचार का सबसे अच्छा माध्यम यानी कि बेस्ट कम्युनिकेशन डिवाइस कंप्यूटर और एक इंटरनेट कनेक्शन, इन दोनों के मदद से यह दुनिया का सबसे बेहतरीन संचार का माध्यम कहा है। कंप्यूटर पर इंटरनेट की सेवा आप बिना रोक टोक के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने दूर बैठे दोस्त परिवार वालों से कंप्यूटर पर वीडियो चैट, मैसेजिंग, ईमेल के माध्यम से आसानी से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप दूसरों के द्वारा प्रकाशित किए गए चीजों को देख और सुन सकते हैं। आप और हम ये जानते हैं कि हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर यूज होता है, यानी कि एजुकेशन फील्ड, बिजनेस, यानी कि बिजनेस में भी कंप्यूटर का यूज होता है। यह कैसे यूज होता है? जैसा कि आपका बिजनेस है कपड़े का, ओके, तो कपड़े के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी इंटरनेट से अपना बिजनेस चलाना हो, जिससे हमारा बिजनेस आगे चल सके। ओके, हॉस्पिटल्स में सारे पेशेंट्स और डॉक्टर के रिकॉर्ड करने के लिए, बैंकिंग में अकाउंट की वेरिफिकेशन और अकाउंट खोलना, उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, वो सारी जानकारी प्रिंटिंग के कंप्यूटर में है। गवर्नमेंट ऑफिस में भी कंप्यूटर का यूज होता है। कैसे यूज होता है? लाइक आप शायद अपने पापा के साथ या अपने रिलेटिव के साथ गवर्नमेंट ऑफिस में गए होंगे, तो वहाँ सब अधिकारी आपका पर्सनल रिकॉर्ड देखते हैं, आपका आधार कार्ड बनाते हैं, आपका कैरेक्टर्स आपका रेशन कार्ड बनाते हैं, एक्शन। घर में आप कंप्यूटर की यूज कैसे करते हो कि अपना डेटा मैनेज करने के लिए। मार्केटिंग, हमारे घर पर जो मार्केटिंग करने के लिए लोग आते हैं, लाइक कोई भी चीज बेचने के लिए, शैम्पू, साबुन, से कहते हैं मार्केटिंग, वो भी कंप्यूटर पे ये ही आता है कि कंप्यूटर में दिखाया गया था कि ये एरिया में हमने मार्केटिंग नहीं की। और स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि स्टूडेंट के हिसाब से आप अपने कंप्यूटर का यूज कैसे करते हैं। ओके, कुछ और एडवांटेजेस भी हैं। स्टोरेज इंफॉर्मेशन, क्विक डेटा प्रोसेसिंग, ऑडियो विजुअल एड्स, data precision of information, access to the internet, quick communication between students, teachers, and parents. Okay. Now we will learn about history of computers. ये है हमारा ABACS, जो पहला मशीन था। ABACS से ही कंप्यूटर का विकास शुरू होता है। ABACS लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता है, जिसके अंदर तारों का फ्रेम यानी कि फ्रेम ऑफ वायर्स लगा होता है। प्रत्येक तार में 7 डीप छेद वाले पक्की मिट्टी के गोल टुकड़े या दाने होते हैं। ABACS मुख्यतः 2 भागों में विभाजित होता है, ऊपरी भाग या A1, निचला भाग या A।
बॉक्स के ऊपरी भाग के प्रत्येक तार में 2 बीट या दाने होते हैं, जिनमें प्रत्येक का मान 5। पिछले भाग के प्रत्येक तार में 5 बीट या दाने होते हैं, जिनके प्रत्येक मान 1। Now we read our page number 5. Done very quickly. वो पैराग्राफ वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. Number 2. Napier's bonds and slide. In the year 1640, a Scottish mathematician called John Napier invented a device for doing multiplication. It was known as John Napier's bonds. Napier's bonds were a set of rods carved from bonds. Each rod had 4 faces. The numbers 0 to 9 were marked on them in such a way that you could find out the product of any numbers by placing the rods side by side. Inspired by Napier's bonds, an English mathematician called William Hertzfeld invented a device in the year 1620. It was called slide rule. A slide rule consists of 2 scale rules, one fixed over the other. These 2 rules slide another each other so that multiplication, division, and even more complex calculations can be easily, quickly, and accurately done with the help of numbers marked on them. Before the electronic calculator was invented, for about 300 years, scientists and mathematicians used the slide rule. अब हम इसे हिंदी में समझ लेते हैं. नेपियर्स बॉन्ड्स इसे कहते हैं, जो आपके बुक में भी दिखाया गया. इस युक्ति का निर्माण हुआ स्कॉटलैंड 1614. कब? 1614. इस यंत्र के आविष्कारक थे जॉन नेपियर, महान गणितज्ञ थे. इस यंत्र का निर्माण हुआ था जनवरी की 3rd से. नेपियर्स बॉन्ड्स या नेपियर्स छड़े जिस विशेष रूप से उपयोग स्थिरता से गुणा करने. इस यंत्र का आकार था आयताकार. संरचना: ये कुल 10 आयताकार पट्टियों होती, जिन पर क्रमशः 0 से 9 तक पहाड़ से इस प्रकार लिखे होते हैं कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंक के पास आ जाते. इनका स्वरूप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे एक तार में पिघले हुए लूडो के कई सारे पासे. इन पट्टियों का विवरण और उपयोग नेपियर की मृत्यु के बाद सारे संसार के सामने आया. इसके बाद है स्लाइड रूल. इस यंत्र का आविष्कार जनवरी 1620 में हुआ. इस यंत्र का आविष्कारक थे विलियम ऑर्ट्रेड, गणितज्ञ थे. इस यंत्र का प्रयोग हुआ 20वीं शताब्दी के 8वें दशक तक. इस यंत्र की कार्यप्रणाली आधारित थी लघु गुणा. संरचना: इसमें 2 विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियां होती थी, जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरकार का महत्वपूर्ण क्रिया संपन्न होती. स्लाइड रूल का उपयोग वैज्ञानिक गणनाओं में कई शताब्दियों तक किया जाता. अब उसके बाद है पास्कल. ये पास्कल थी फोटो. ये बात पहले हम रीड करेंगे. In the year 1640, a young Frenchman called Blaise Pascal invented a mechanical calculating machine for doing addition and subtraction. It was called Pascaline. Pascaline consisted of a set of interlocking forks and wheels of various axes. However, in the year 1674, a German mathematician called Gottfried Leibniz modified the Pascaline and introduced a new machine which could even do multiplication and division. It was called multiplier wheel. Number 4. In the year 1834, Charles Babbage, a Scottish mathematician, first developed the concept of a computer by designing a calculating machine or analytical engine. Like the modern computer, the analytical engine had an input device, a unit for mathematical calculations, a control unit, a memory bank, and an output device. Unfortunately, Babbage could not complete the constructions of the machine. However, he is known as the father of the computer. अब इसी के बारे में हम हिंदी में जान लें. फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेस पास्कल ने 1642 में प्रथम
यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया। यह केवल जोड़ या घटा सकती है, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये है हमारा एनालिटिकल इंजन। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1834 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, जो भाप से चलता है तथा गणनाएं कर सकता है। तथा 1842 में बेबेज ने एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया, जो पंच कार्ड के दिशा निर्देश अनुसार कार्य करता था तथा मूलभूत अंकगणित तत्व जोड़, घटा, गुणा, भाग कर सकते हैं। चार्ल्स बेबेज की इस उपलब्धि के कारण उन्हें कंप्यूटर का जन्मदाता यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये दो अंकों की संख्या प्रणाली बाइनरी प्रणाली के आविष्कार श्रेय भी है। बेबेज का एनालिटिकल इंजन, इस यंत्र का आविष्कार हुआ इंग्लैंड में। इस यंत्र को कहा जाता है कंप्यूटर का प्रोटोटाइप। इस यंत्र के 5 भाग थे और चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा। अब हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 7। पंचिका। इन द ईयर 1890, Herman Hollerith, an American statistician, designed a machine that was driven by electricity. He used Panchaka stick paper with holes Panchaka with spoons to feed data or numbers into the machine. Panchakas were used in computers for many years since then. Number 6. First generation computers. 1940 to 1950. Around the year 1920, an electrical device called vacuum tube was invented. It brought about a tremendous increase in the speed of calculation. In 1945, J.P. Ackworth and John Mauchly, two American engineers, used vacuum tubes to build ENIAC, the first electronic calculating machine. Compute means to calculate since. Complete means to calculate since the ENIAC could do calculations. It came to be known as computer. Many improvements were made in the computers since then. It began to be used not only during calculations but also for writing, listening to music, drawing, playing games, and many other tasks. However, it is still called computer. The ENIAC was so large that it would occupy a big hall. It had around 18,000 vacuum tubes and consumed a large amount of electricity. Nevertheless, it had a fantastic speed of doing calculations. It used to perform 5,000 additions in 1 second in 502-digit multiplication in 1 second. अब यही पेज को हम हिंदी में समझ लेते हैं। पंचकार की परिभाषा एक तरह से कठोर पन्नों से बना हुआ एक कागज जिसमें हम डिजिटल डाटा को रखते हैं। इनमें जगह जगह कुछ छेद भी होते हैं जिनकी मदद से यह डाटा को रखता है। पहले के डिजिटल कंप्यूटर पंच कार्ड को इस्तेमाल करते थे। पंच मशीन में डाटा कंप्यूटर प्रोग्राम आदि में चलाने के लिए इनको ही इस्तेमाल किया जाता है। कुछ वर्किंग मशीनों में भी आज भी पंच कार्ड इस्तेमाल होता है। पंच कार्ड को हम वॉलेट कार्ड या आईबीएम कार्ड भी बोलते हैं। यह कंप्यूटर में लग जाता है, इसलिए ज्यादा कंपनी इसको डाटा स्टोर करने के लिए काम में लेती है। चलो हम इसी पेज को पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। द ENIAC is called the granddaddy of the present computers. Computers are like the ENIAC, which used vacuum tubes are called first generation computers. Though these computers were very large, they were not as efficient as the small kind of computers available today. ये जो आपको दिखाया गया है ये ENIAC।
Next, second generation computers, 1955 to 60. In 1948, William Shockley invented the transistor, which replaced the vacuum tubes in a computer. The transistor was 200 times smaller than the vacuum tube and it consumed less electricity. First transistor computer was created in 1956. The processing speed of the second generation computers was greater than the first generation computers. ये ट्रांजिस्टर. The third generation computers, टाइम है 1960. In 1958, ZTP invented the chip. It fixed many chip transistors and other electronic components on a single chip called integrated circuit. इसे IC भी कहते हैं. Today, thousands of transistors and other electronic components are fixed on a small chip. इसे integrated circuit कहते हैं. Next, fourth generation computers. टाइम है 1971 to now. इसका मतलब present. The present day computers are the fourth generation computers as the result of the VLSI, very large scale integration technology. A million electronic components can be fixed on a single tiny microprocessor chip. The microprocessor chip was invented in 1969 by Ted Orr. First generation computer, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर एनिया. इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब शामिल. यह जॉन बेकर एडवर्ड और जॉन मॉकली द्वारा विकसित किया गया और यह एक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर. संक्षेप में हम जान लेते हैं. अवधि थी 1940 to 1950. टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब एक कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता था. कैलकुलेशन को मिलीसेकंड में किया जाता था. आकार में भारी और डिजाइन में जटिल. इसे रखने के लिए बड़े कमरे की आवश्यकता है. बहुत अधिक गर्मी पैदा करता. निरंतर हार्डवेयर मेंटेनेंस की आवश्यकता. बहुत गर्मी पैदा करता है, इसलिए एयर कंडीशनर कमरों की आवश्यकता होती है. हार्डवेयर ऐसे पहली पहली कंप्यूटर के उदाहरण. इट इज यूज्ड टू परफॉर्म 5,000 addition in 1 second and 500 two-digit multiplication in 1 second. अब विशेषताएं जान लेते हैं. वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजिकल अविश्वसनीय, केवल मशीन सपोर्ट लैंग्वेज, बहुत कीमती, बहुत गर्मी उत्पन्न होती थी, स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, विशाल आकार, पीसी की आवश्यकता, गैर पोर्टेबल और बहुत अधिक बिजली इसमें यूज होती है. अब हम सेकंड जनरेशन के बारे में जानेंगे. कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी का पीरियड 1955 to 1960 के बीच. दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के सिस्टम इसके सभी स्तरों पर कई महत्वपूर्ण विकास देखे. तकनीक से लेकर वैज्ञानिक एप्लीकेशंस को लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रोग्राम लैंग्वेज के बुनियादी सर्किट का निर्माण किया. ट्रांजिस्टर द्वारा वैक्यूम ट्यूबों के प्रतिस्थापन ने कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के आगमन को देखा. वे वैक्यूम ट्यूब पर एक प्रयास उतरा. फिर भी कंप्यूटर को गर्मी के स्तर पर नुकसान पहुंचाने के लिए बावजूद, हालांकि वे वैक्यूम ट्यूबों से बेहतर थे, जिससे कंप्यूटर छोटे, तेज, सस्ते और बिजली के उपयोग में कम. In 1948, William Shockley invented the transistor. ये बात. इसकी विशेषताएं जान लेते हैं. यह पहली पीढ़ी की तुलना में विश्वसनीय था. पहली पीढ़ी की तुलना में छोटा आकार था. पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में कम गर्मी उत्पन्न करता था. पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में कम बिजली खपत करता था. पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में फास्ट और बहुत महंगा. The first transition computer was created in 1953. Third generation computer in 1958. इसी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया. एक आईसी में ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर्स एसोसिएटेड सर्किट के साथ आईसी का आविष्कार जैक किल्बी ने किया. इस विकास ने आकार में छोटे, विश्वसनीय और कुशल कंप्यूटर बनाए. इस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया.
तीसरी पीढ़ी की विशेषता आईसी का इस्तेमाल किया गया, इसलिए दो पीढ़ियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय, छोटे आकार के, कम ध्वनि उत्पन्न करते थे और फास्ट, इसका मेंटेनेंस भी था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 टू प्रेजेंट। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किट का इस्तेमाल किया। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किट में ट्रांजिस्टर और अन्य टर्मिनल सर्किट एलिमेंट्स एक ही चिप पर लगाए। इसी के कारण इस चौथी पीढ़ी को माइक्रो कंप्यूटर बनाने में संभव हो। माइक्रोप्रोसेसर चिप was invented in 1969 by टेड। अब इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जो सस्ते थे, पोर्टेबल और विश्वसनीय इसके में उपयोग होता है। अब हम जानेंगे पांचवी पीढ़ी के बारे में। पांचवी पीढ़ी में SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी बनी। ये पीढ़ी ने समानांतर प्रोसेसिंग हार्डवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट में AI कहते हैं, सॉफ्टवेयर पर आधारित। यह कंप्यूटर विज्ञान की एक उभरती शाखा है जो कंप्यूटर बनाने के तरीकों के बारे में खोज रहा है और जो मनुष्य की तरह सोचते हैं। साइंटिस्ट लगातार कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। एडवांस प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी की सहायता से वास्तविक युक्ति के साथ कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात। अब हम पेज नंबर 9 पढ़ेंगे। In microprocessor chip, the entire working of a computer functions like the human brain, but it does not have its own brain, and so it requires set of instructions to carry out its functions. So personal computers are manufactured using microprocessor chip. ये हमने जाना। Types of computing. Depending on size, cost, integrity, speed, and efficiency, computers can be broadly classified into the following categories. Number 1, supercomputers. Supercomputers are large-sized computers, and so they are also called monsters. They are used to perform the most complex tasks, which require high speed and precision. It takes a supercomputer 90 seconds to do the work which your PC could do in 20 hours. Supercomputers are used in weather forecasting, defense technology, and scientific research. In space technology, they are used to design and construct rockets and satellites. Once they into the space, can also control and monitor their movements. Number 2, mainframe computers. These computers are smaller than supercomputers, but they are very fast and expensive. More than 100 people can use a mainframe computer at the same time. Large-scale industries use mainframe computers in the design and manufacture of electronic goods and other machines. In large institutions like banks, airlines, and universities, these computers are used to store and analyze data or to maintain a large network of computers. Number 3, mini computers. These computers are smaller and cheaper than mainframe computers. It can be used by more than 10 people at the same time. Like mainframe computers, mini computers are also used by large institutions like banks, commercial organizations, government departments, and other organizations. Number 4, microcomputers. These computers are used in homes, offices, and schools. They cost less than mini computers, and only one person can use a microcomputer at a time. They are used to create and store documents, maintain accounts, keep a record of data like names, addresses, phone numbers of friends and relatives, play games, and listen to music also. These are 3 main types of microcomputers. Number 1, desktop computer, जिसे PC कहते हैं. Number 2, लैपटॉप कंप्यूटर और नंबर 3, कैमरा। अब उसे हम हिंदी में जानते हैं। सुपर कंप्यूटर डाटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डाटा के प्रोसेस के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत ही खास कंप्यूटर होते हैं जो बड़ी और महत्वपूर्ण खोजों के महत्वपूर्ण और
वैज्ञानिक कार्यों के उद्देश्य को करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन्हें नियंत्रित करने के लिए, अंतरिक्ष में खोज करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर्स को कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। जो काम हमारा पीसी 20 आवर्स में कर सकता है, वही काम को करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स को सिर्फ 90 सेकंड्स लगते हैं। नंबर 2, मेन टाइम कंप्यूटर। मेन टाइम कंप्यूटर भी काफी महंगे होते हैं। इनका उपयोग सरकारी संगठनों में और बड़ी व्यवसायिक कंपनियों द्वारा वर्कर के संचालन के लिए किए जाते हैं। ये कंपनी के बड़े कमरे में रखे जाते हैं, जहाँ से ठंडा रखने और दूसरी सुविधाएं। मेंटल कंप्यूटर बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को बहुत तेज गति से प्रोसेस कर सकते हैं। विशाल व्यवसायिक बैंक, संख्या संस्थान और इंश्योरेंस कंपनियों में उसके ग्राहकों को डेटा रखने के लिए मेंटेन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। वो एक समय पर 100 पीपल इसका यूज कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर प्राय छोटे व्यापार में उपयोग के लिए लाए जाते हैं। हालांकि ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के समान शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन इतनी मिनी कंप्यूटर एक शक्तिशाली मशीनों की गिनती में आते हैं। इनका इस्तेमाल बड़ी या मध्यम वर्ग की कंपनियों में उत्पादन सौदों में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर एक एकल उपयोगकर्ता और बहु उपयोगकर्ता यानी कि सिंगल एंड मल्टी यूजर कॉन्सेप्ट की अवधारणा के अनुसार भी कार्य करते हैं। उस पर एक टाइम में 10 पीपल काम कर सकते। अब माइक्रो कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर 2 कारण से कहा जाता है। पहला, इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। दूसरा, यह कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर आकार में इतना छोटा होता है कि इसको केवल एक केस में रखा जाता है। जो कंप्यूटर सामान्यतः सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। इसकी कार्यप्रणाली तो लगभग बड़े कंप्यूटर के समान ही होती है, लेकिन इसका आकार और दुनिया में कम उनकी दुनिया में कम होता है। इस कंप्यूटर पर सामान्यतः एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये लैपटॉप कंप्यूटर और ये है टैबलेट। There are 3 main types of microcomputer: desktop computer, laptop computer and handheld, यानी कि टैबलेट। ये कुछ फीचर्स है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ये है माइक्रो कंप्यूटर, ये मिनी कंप्यूटर, ये पर्सनल, ये सुपर कंप्यूटर, ये लैपटॉप, ये है टैबलेट। ये कंप्यूटर के प्रीवियस के फीचर्स, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, ये फोर्थ जनरेशन, ये फिफ्थ जनरेशन। इफ एनी डाउट फॉर और मैसेज में, इस लेसन में आपकी बुक में जो है इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। अब इसी लेसन की एक्सरसाइज को पढ़िए, मैं सिर्फ आंसर ही दूंगा, ठीक है। नंबर 1 है नेम द फॉलोइंग। द फर्स्ट कैप्टन डिवाइस is eyes. A set of roads carved from bones with their bones. Calculating machine invented by Blaise Pascal. Pascal. Number 4, inventor of American engine, Charles Babbage. A device designed by William Ortway. Slide. Number 6, strip paper with holes punctured at fixed points. Puncture card. Number 7, electrical device used in Nokia vacuum tube. Computers use weather forecasting. Supercomputer. 9, the computer used in large industries. Mainframe computer. And 10, computers used at home, microcomputer and desktop. Number 2, write the following. Any 2 features of computers: speed and accuracy. Any 2 advantages of computers: education and entertainment. Number 3, number of types. 2 types of computers: mini computers and microcomputers. 2 uses of supercomputers: weather forecasting and defense technology.
Two places where many computers are used: banks and government departments. Two types of microcomputers: desktop computers and real-time computers. अब हम ब्लैंक्स की ओर जाए. The above is the earliest computing device. Napier's bonds was a set of boards carved from bones. Inspired by Napier's bonds, William Ortfield invented a device called slide rule. Blaise Pascal invented a mechanical typing machine called the passline. Ortfield modified the passline, introduced a new machine which could even do multiplication and division. It was called analytical multiplier wheel. Charles Babbage designed the analytical engine. Charles Babbage is called father of the computer. The ENIAC was built using vacuum tubes. In the second generation, computers vacuum tubes were replaced by transistor. In the third generation computers, transistor and other electronic components were fixed on a single chip called transistor. In the third generation computers, transistor and other electronic components were fixed on a single chip called indicated circuit. Today's personal computers are manufactured using microprocessor chips. Supercomputers are used in weather forecasting. समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? Hermann Ferrari used functional card to feed data for numbers into the machines. The ENIAC was the first electronic calculating machine. ENIAC is the first generation computer. The present day computers are the fourth generation computers. Fourth generation computers use tiny microprocessor chip. 18. The fifth generation computers will use SLSI chips. Banks use mainframe computers. Okay. Microcomputer. Laptop computers are a type of microcomputers. अब नेक्स्ट नंबर 1 का आंसर है डी, नंबर 2 का आंसर है बी, नंबर 3 का आंसर है ई, नंबर 4 का आंसर है ए, नंबर 5 का आंसर है सी. If any confusion in this lesson, call or message me. Thank you. Have a nice day.